We are the Gujarat Technological University. Since its inception over a decade ago, GTU has been empowering young and curating minds to realize their true potential. Over 4 lakh inspired students are enrolled with one of the premier academic universities in India. With more than 450 affiliated colleges in its fold operating across 5 zones of the state, GTU, the International Innovative University, your place to move forward. Namaskar friends, in this video we will learn the subject Basic Electrical Engineering Unit number 2 AC Circuits. The major topic is 3-phase balanced AC circuits. In previous video we learned about the different connections of 3-phase supply and load in star and delta manner like this diagram. Friends, इस कनेक्शन को याद रखने के लिए कुछ टेक्निक है. अब सोचिए, ये स्टार और डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन है, उसका कनेक्शन किस ऑटोमोबाइल कंपनी के लोगो जैसे दिखता है? थिंक. यस, यू आर राइट. दिस स्टार कनेक्शन is like the symbol of Mercedes and this delta configuration is like the symbol of Lancia. इन दोनों के लोगो जैसा ये कनेक्शन दिखता है, तो याद रखने के लिए हम ये दो लोगो याद रख सकते हैं. Now let us understand some basic terminologies. First is line voltage. The line voltage is the voltage measured between any two lines in a 3-phase circuit. It is also known as phase-to-phase voltage or line-to-line voltage. It is denoted by VLL, where L is either R, Y or B. Phase voltage. The phase voltage is the voltage measured between a phase and a neutral or across a single phase winding component in a 3-phase circuit. It is denoted by VPN or VPH, where P and PH are either R, Y or B. Line current. The line current is the current through any one line between a 3-phase source and load in 3-phase circuit. It is denoted by IL, where L represents the line. Phase current. The phase current is the current through any one phase and a neutral in a 3-phase circuit. It is denoted by IPH, where PH represents the phase. Balanced 3-phase. The balanced 3-phase voltage or current is one in which the size of each phase is the same and the phase angles of the 3 phases differ from each other by 120 degree electrical. A balanced 3-phase network is one in which the impedances in the 3 phases are identical. With such a balanced load, if balanced 3-phase supply is applied, the currents also will be balanced. Now consider this balanced star configuration. Let us try to understand all these terminologies one by one. Let us start with line voltage. The voltage between this R and Y, that is VRY. Same way between R and B, VBR, and same between Y and B, VYB. All these 3 voltages are between phase to phase. So this voltage is known as phase to phase voltage or between R and Y line. So it is line to line voltage. Now phase voltage. Consider a single winding. Let's take the R winding. So voltage between this R and neutral. So that will be the phase voltage of R phase. Same way the voltage between Y and neutral, that is the voltage of Y phase winding. Same way the voltage between B and neutral, that represents the B phase voltage. Now in the line voltage, let's say between R and Y, VRY, that is the line voltage,
Now in line voltage circuit from R to R winding, Y phase winding and Y. So this line voltage considers two windings in a series in this network, whereas the phase winding only considers a single winding component. Let's for R phase winding, that is a single winding between R and neutral. Same way for others. अगर हम बैलेंस कंडीशन की बात करें तो बैलेंस कंडीशन में एक तो ये है कि सप्लाई और लोड इन दोनों में सब फेज सब लाइन का सब कंपोनेंट का इम्पीडेंस सेम होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन में हम ये जो बैलेंस्ड सोर्स है, बैलेंस्ड सोर्स का मतलब ये होता है कि सोर्स में सब लाइन वोल्टेज भी सेम हो और सब फेज वोल्टेज भी सेम हो। तो ये बैलेंस्ड सोर्स के यूज़ करके इफ़ वी सप्लाई द वोल्टेज टू दिस बैलेंस्ड लोड, then the current flow through this balanced load will be same. That means लोड में फेज करंट भी सेम होंगे सब और सब लाइन करंट भी सेम रहेंगे। तो ये जो कंडीशन बनती है उसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन। सो दिस रिप्रेजेंट्स द बैलेंस्ड स्टार कनेक्शन। नाउ ट्राई टू एनालिसिस दिस। लेट लाइन वोल्टेज, अगर ये डायग्राम देखे स्टार कॉन्फ़िगरेशन का, सो इन हियर all line voltages will be same. So VRY is equal to VBY, that is equal to VBR, phase voltages. Again balanced condition है तो R phase के voltage VR is equal to VY and VB. So all phase voltages are same. Again line current, that also will be same in balanced condition. So IR is equal to IY is equal to IB, I line current. Same way phase currents will be same. So IR phase is equal to IY phase is equal to IB phase, that is equal to I phase. अगर रिलेशन देखा जाए लाइन और फेज करंट में, देन IR line is equal to IR phase. Same way for Y and B phase. तो एक कंक्लूजन ये बनता है कि इन स्टार कॉन्फ़िगरेशन, दैट मीन्स इन बैलेंस्ड स्टार कॉन्फ़िगरेशन, line current will be same as phase current. So line current is equal to phase current. Same way balanced condition में line voltage और phase voltage के बीच में रिलेशन देखें तो let us start with VRY. VRY is equal to VR phase minus VY phase. ये माइनस बीच में कहाँ से आया? That means the voltage between R and Y line is the representation of difference of R phase voltage and Y phase voltage. Let us try to understand this first. From this diagram, this is the basic reference vector diagram where R phase vector is the reference vector. इस reference के through ये Y phase is again Y minus 120 degree out of phase and YB is the minus 240 degree apart from R phase. This is the assumed direction. अगर ये डायरेक्शन में जितने भी वेक्टर है उसको हम पॉजिटिव मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं तो इसके 180 डिग्री में अगर हम कोई भी वेक्टर ड्रॉ करेंगे देन इट विल रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव मैग्नीट्यूड। लेट अस कंसीडर हियर माइनस y। अभी ये जो y बना है दैट इज पॉजिटिव बिकॉज ये डायरेक्शन हमने जो एज्यूम की है दैट इज इन पॉजिटिव डायरेक्शन। अगर सेम y को हम 180 डिग्री आउट ऑफ फेस मतलब कि इसके सामने हम ड्रॉ कर दे हैं इतना ही मैग्नीट्यूड, देन द डायरेक्शन विल बी माइनस लाइक दिस। ये Vy की डायरेक्शन अब माइनस हो गई, मैग्नीट्यूड उतना ही है लेकिन डायरेक्शन 180 डिग्री आउट ऑफ फेज हो गई, दैट्स व्हाई इट इज माइनस। सो ये हो गया हमारा माइनस Vy। नाउ वी हैव टू टेक दिस डिफरेंस VR एंड Vy का। तो अभी ये यहाँ पर ये रेफरेंस वेक्टर है VR और माइनस Vy, इनका एक रिजल्टेंट बनेगा।
Yes, like this. So this resultant is known as the differ voltage between VR and Vy. So this parallelogram, in parallelogram, this resultant vector represents VRY, that is nothing but the लाइन वोल्टेज. तो ये स्टार कनेक्शन में एक जो लाइन वोल्टेज है वो दो फेज वोल्टेज का डिफरेंस से बनता हुआ मिल रहा है. दिस इज फॉर वन फेज. दूसरे लाइन वोल्टेज की बात करें तो कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा. अब ये डायग्राम को याद रखना है तो पहले हमने जैसा एक शेप लिया था वैसा ही हम शेप एज्यूम कर सकते हैं. ये शेप किस तरह दिख रहा है? यस, दैट इज द सिंबल ऑफ मर्सिडीज. नाउ फ्रॉम दैट पैरेललोग्राम द मैथमेटिकल इक्वेशन will be derived like this. So ultimately the line voltage is equal to √3 times phase voltage. तो ये कंक्लूजन ये हमारा बन रहा है अगर पावर की बात करें बैलेंस द स्टार कॉन्फ़िगरेशन में. सो पावर विल बी नथिंग बट द वेक्टर सम ऑफ ऑल थ्री डिफरेंट फेजेस. इफ यू कंसिडर फॉर फर्स्ट आर फेज देन VPH multiplied by IPH multiplied by power factor cos 5, because for single phase power it is P is equal to VI cos 5. अगेन उसमें हम ऐड करेंगे Y फेज का पावर, सो VPH IPH cos 5 और अगेन तीसरा. तो एक रिजल्टेंट समरी देखा जाए तो पावर इज नथिंग बट दी 3 टाइम्स ऑफ एनी वन फेज पावर, बिकॉज इन बैलेंस्ड कंडीशन वी अज्यूम दैट ऑल थ्री phases have same voltage, same current and same power. So we can directly write like this, total power is equal to 3 times the power of any one phase. So it will be derived like this: P is equal to √3 VL IL cos 5, where L is represents line. Same way, let us try to understand delta. In delta configuration, if we consider line voltage between VRY, so this is the line voltage VRY. If we consider phase voltage of R phase winding, that is this VR phase, so in this condition VRY is equal to VR phase. तो एक कंक्लूजन हमारा ये रहेगा कि डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज सेम रहता है. Now let us try to understand mathematically again. Line voltage is equal to VRY. See from this diagram, is equal to VYB is equal to VBR. So all line voltages are same because this is delta configuration in balanced condition. For phase voltages, VR phase is equal to VY phase is equal to VB phase. That means all three phase voltages will be same. Again, for line current, same way, IR line is equal to IY line is equal to IB line. That is, all line currents will be same, and same for the phase currents. इसमें line and phase voltage का relation देखा जाए तो VRY is equal to VR phase, VYB is equal to VY phase, VBR is equal to VB phase. So here line voltages and phase voltages remains same in delta configuration. लाइन करंट और फेज करंट का रिलेशन देखें तो IR लाइन इज इक्वल टू IR फेज माइनस IB फेज. अगेन लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेक्टर डायग्राम. अगर वेक्टर डायग्राम देखें तो जैसे ही हमने स्टार कॉन्फ़िगरेशन में डायग्राम देखा है वैसा ही वेक्टर डायग्राम इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं और वैसे ही अंडरस्टैंडिंग है. तो इसका जो रेफरेंस वेक्टर डायग्राम है उसको याद रखना है. तो ये कौन से सिंबल जैसा दिखता है? Yes friends, you are true. That is like a Mercedes logo. So considering the parallelogram formed by IR and IB, the equation for line current with respect to phase current is nothing but the line current is equal to √3 times phase current. This is the relation. For
पावर इन डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस्ड कंडीशन, सेम वे जैसे ही हमने स्टार कनेक्शन में इक्वेशन डिराइव किया था वैसे ही डेल्टा कनेक्शन में इक्वेशन डिराइव होता है। तो इसमें अल्टीमेटली आएगा टोटल पावर P इज इक्वल टू √3 टाइम्स VL IL cos phi। लास्ट में एक समरी देखते हैं। लेट अस फॉर स्टार कनेक्शन, इट शेप लाइक स्टार और वाई, इट हैव कॉमन कनेक्शन पॉइंट कॉल्ड न्यूट्रल, line currents and phase currents are same, line voltages are √3 times of phase voltages. This type of configuration is used both for single phase and three phase loads. This type of configuration have 3-phase 3-wire and 3-phase 4-wire systems. In star configuration, phasor sum of all the phase currents is 0. Now for delta configuration, it's shape like delta, have no any neutral point, line voltage and phase voltages are same, line currents are √3 times of phase currents. This type of configuration is used only for 3-phase type loads. This type of configuration have only 3-phase 3-wire system. The phasor sum of all the phase voltages is 0. So this is the summary. If you have any query regarding these topics, you can email us on bhavin.kanani@darshan.ac.in. For more details, you can refer our website www.darshan.ac.in.